or you can plot a graph, students, and I wanted to solve it graphically. Janvi, are you there, Janvi? Janvi, are you there? Janvi, reply fast, otherwise you're out of the lectures. Yes, anybody? Amira, can you answer? Anuj, Dhruv, Krish, Krishat, Mayank. Can you answer? Om, Panderi, Prachi, Rakshanda, Priya, Sanya, Shyam, Soham, Tejas, Vishal, Yash. Can you answer? So can I? Who's this? Yes, love the answer. So it is velocity time graph where velocity is 20 is something above high line. Okay. And so the graph is like a pyramid because the time is at 10 and 35. Oh, great. It's a kind of a pyramid, or it's what is the geometrical shape you're getting it? Is it a trapezium? Yes, sir. So why you said pyramid? Lovely. Sir, It's a simple. actually, I'm not getting the name of that. No, sir, Okay, it is fine. pyramid. Fine. It's a trapezium. Okay, the graphical representation is a trapezium, students. Okay, they've given you time on the x-axis and velocity is considered to be in y-axis. Students, see everybody, see how exactly lovely she's answering. So cleverly she's putting across things. So over here she's trying to say we are doing the 8 question students. Okay, Sir, as per her, what she's saying it. Wait a minute, lovely. I'm putting it. sir is Okay, not Labdi. huh? It's not Labdi. Then Sir, it's Kashish. where is your useful lovely? What, sir? A name is showing Navdi in the this thing, group. Okay, then you can call me Labdi. No, I'm serious with it. नहीं सर मैं नहीं थी Now see, now Kashish is speaking. Okay. Friends, but it's I don't know about it, but the name came in over here, Labdi, and somebody in between right now was Kashish who was saying it. Okay. So who's answering now? Can you tell me? Sir, it's Kashish. Don't fool around. The name is coming Labdi over here. Okay, fine. Kashish, answer. How's the graph will be? Trapezium. Very good. Okay, now can you say in how much time it reaches to 20 meters again? 10 seconds. Very good. Very smart. In 10 seconds. Then for the next till what time its speed remains constant?
35 seconds. Okay, the total time is given to you is how much? 39. Now, how do you come to know that the time taken for it will be different for other one? From rest to accelerate at 20, it takes 10 seconds. It then runs with a constant speed and finally it is brought to rest in 40 meters. The total distance covered 40 meters with constant retardation. So how did you find out the time in that case? So first I have found, find that S total, which is S1 plus S2 plus S3. Okay. So what exactly? See, the total distance given to you is how much? 640 meters. Are you getting it? 640 meters is the total distance given to you. So now when you look into the 640 meters is the total distance given to you. Can you find out the time taken for the body to move from a certain velocity, 20 meters per second to 0 meters per second? Yes or no? Yes, can you tell me? $640 meters is the total distance now. Total distance. And if you read it very carefully, students, it then runs at a constant speed and finally is brought to rest at 40 meters with constant retardation. So what is the total, what is the distance covered for retardation they have given to you is 40 meters. Yes, Kashish, I'm waiting for you. Yes, sir. Bolo. Okay, Sir, Kashish. so your acceleration initial will be 2 meters per second square. Acceleration, absolutely. देखो यहाँ का acceleration तुम्हें positive मिलेगा. Yes, यहाँ का sir. acceleration negative मिलेगा. Negative मिलेगा. यहाँ का acceleration 0 मिलेगा. तो हाँ, अगर sir. मैं acceleration ये निकालता हूँ for motion to be accelerated तो A is equal to what? V minus U upon T. उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है फिर भी I am removing it, students. That's the slope of the graph. So final velocity कितना है? 20. Initial is 0. In time 10. So acceleration 2 meters per second square होगा. Yes, sir. अभी यहाँ का मुझे अगर acceleration चाहिए तो can I say in how much time the motion is getting retarded? So distance covered is 40 meters for retardation. Students, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? Question 1. For retardation, what is the distance covered? Students, 40 meters. what is the distance covered? 40 meters. Agreed. Therefore, can I say using the formula of V square is equal to U square plus 2AS. देखो final velocity क्या है? 0. Initial क्या है? 20. Twice acceleration मुझे नहीं पता. What is the distance covered? 40. Now can I get the acceleration in positive or negative? Negative, sir. Again, तुम्हारा आंसर यानी -400 upon 80. So what's my answer? -5 meters per second Minus square. 5 meters per second square. देखो तुमने positive acceleration बोला, तुमने negative acceleration बोला. Can you find out the time taken for this now? Of course, V minus U upon A is equal to T. Since what's the formula for acceleration? Acceleration is V minus U upon T. So T is equal to what? V minus U upon A. Final velocity कितना दिया है? 0. Initial velocity कितना दिया है? 20. Acceleration कितना दिया है? -5. Time. Can you take the time for it? Yes, sir. 4 seconds. यानी आंसर सुनना. A body to move to 20 meters per second, it takes 10 seconds. यहाँ से यहाँ तक, how much is the time take? 4 seconds. यहाँ से यहाँ पे 10 seconds हो गया. Now is it clear to all of you all? Students, क्या अभी clear हुआ सबको? Kashish, is it clear? Yes, sir. Yes, Lovely, sir. is it clear? Yes, sir.
Rapti, what happened to you? Not feeling well? Just a little headache. Huh? Just a little headache. Okay. It's a viral. It's everyone is getting viral. Students, the rest of the students, are you getting it? Yes, sir. Now, the question asks the students, find the value of acceleration, retardation, and total time taken. Did you get the value of acceleration as +2? Did you get the retardation as 5? And they're asking you as total time taken. मुझे यहाँ से आके time के लिए 10 seconds मिला, यहाँ से आके लिए 4 seconds मिला. I want to find out time for this interval for uniform speed. Anybody? Now the most intelligent student of the class will answer. Distance is given to you as 640 meters. Come on, anyone? Yes, Yash and Tejas, can you all answer out of your two? Anyone? Yash or Tejas? Are you all there? Yash, Tejas, Yes, sir. can you Yes, sir. answer? I want to find out time taken for this particular part of the question. Shyam, can you answer? Shyam, are you there? Yes, I am there. Can you answer? No, sir, I can't. Okay. Om, Dhruv, Janvi, who's forced to enter inside the lectures. Janvi, are you there? Janvi, can you answer? Janvi? So can we use v square equals to u square plus 2as? For what? If I want to find out time for this, V and U are saying A is 0, my dear. Read the question. Question क्या पूछा? I want to find out the time taken. Total time taken. तो मुझे ये time चाहिए. ये और ये दोनों को add करके. Students, what is 640 meters? Total distance. Total distance. Can you tell me what is the area of the graph of velocity and time is going to give me? Anybody? Area under the graph क्या बताता है? Which physical quantity it shows? Last lecture बताया था कि नहीं बताया था? Slope of the graph का मतलब क्या? Area under the graph का मतलब क्या? Slope is always ratio of y by x, y2 minus y1 upon x2 minus x1. That's the formula for slope. Area under the graph is the area of the geometrical shape, and area में हमेशा product आएगा तुम्हारा y और x. Students देखो ना, velocity किसमें होती है? सर velocity मीटर पर सेकंड में होती है. Time हमेशा किसमें होगा? सेकंड में. Can I take area of the first triangle? Triangle होगा. Second rectangle. Third triangle. So what is area of this? Half into base into height. Base किसमें होगा? Second में. Height किसमें होता है? Meter per second. Second will get cancelled. So can I get my answer in meter? What is that meter is? Distance. अगर मैं speed time graph लेता हूँ तो distance आएगा. Velocity time graph लेता हूँ तो मैं displacement आएगा. अभी देखो area of the second.
Area of a rectangle, length into breadth. Length into breadth. Length is always beta per second, breadth is in second, answer is in beta. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस दिया है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस दिया है, दैट इज एक्चुअली द एरिया अंडर द ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ ग्राफ A1, A2, A3. करेक्ट? So can I say what it is? सर So, इवन आता है क्या बोल रहे हो? It's 140 and 500. Sorry, 100, 540. लेकिन मुझे इसका भी एरिया वही पता है? तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया तो लिखा है। What is area of the triangle? Area of a triangle is what? Half into, ये base है, Base into height. 10 seconds into height is how much? 20 meter per second. Plus, what is area of the second one? Do you know the time taken over here? No, sir, but the second one will be second वाला तो third वाले के निकलने के बाद निकलेगा. So, सेकंड एक्स length में into breadth. Agreed. Yes, sir. Plus, area of the third triangle is half into base क्या होगा? 4 seconds. Into 20. Students, ये second and second will get cancel. क्या बचा मीटर? ये भी आंसर मीटर में होगा, ये भी आंसर मीटर में होगा. देखो 640 will be equal to how much? 2 tens are, so can I say 100 meters plus 20 t meters plus 40 meters. Can I get small t now over here, students? Students? Can I get small t over here? So 640 minus 140, students. What is 640 minus 140 will be? आया 500. How much? 500. 500. 500. And 500 will be equal to how much? 20 t. What exactly t will be equal to how much? 25 20 by 25. 25. Absolutely correct, 25. Now, can you tell me what is the total time taken? Time taken for this is how much? 10 seconds. This is 25 seconds. This is 4 seconds. So what's the total time? 30 39 seconds. 39 seconds. Are you getting, students, now? Yes, sir. Please have everybody has understood. पूछा गया था पहले acceleration के बारे में, फिर पूछा गया था retardation के बारे में, and then they had asked you to find out the total time. लेकिन हमें total distance दिया था 640 meter. And students, I made it very clear. Last lecture में मैंने clearly बताया था what exactly slope of graph means and what exactly area under the graph means, students. For whenever the graph is a straight line, students, whenever the graph is a straight line, the slope of the graph we consider is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Students, do take care of it. Area under the graph will be always the area of a geometrical shape. And if you see over here, its shape is half into base into height. Yes, Alia, I'm so happy that you have been told to enter inside the lectures. Last lecture also, you were not coming into the lectures. You have been forced to enter inside, isn't it, Alia? No, sir. Actually, I was writing my exam. That's why I'm a little late. Which exams you were writing? Sir, English exam. And from which branch you are into? The Mira Road. Did you attend lectures over there if in case when it was offline? Yes, sir. Are you sure? I haven't seen you in the lectures. Yes, sir. You have seen me. Did I ask you questions? Yes, sir. Few questions you have asked me. Okay, fine. But Avinash sir called you up now right now to enter into the lectures? No, sir. Okay, fine. But you are late, quite late in the lectures. Yes, sir. Sorry, sir. Well, last time also you were late, na? That's why I'm saying that. Yes, sir. I won't Okay. do this. See, Janvi, there is a girl called Janvi. She comes into the lectures, but she doesn't put on the mic.
Bolo, she comes into the lectures, but she doesn't put on the mic. And then I force her. I tell her that if you don't put on the mic, I'll throw you out of the lectures. And then she puts on the mic. It's not for the first time. Earlier also it has happened like that. So somewhere I feel like that I'm forcing students to attend lectures. Arey, my dear Janvi, so you can't, Janvi, you can't hear me at all? Tell me, Janvi. So if you can hear me, when is that possible when you keep your mic? Right now you can hear me. Initially क्या हुआ था? तुमने वीडियो रखा था, माइक ऑफ ही रखा था, और वो भी वीडियो ऑफ रखा था, that you can't see me at all. Not even you can hear me. Normally students ऐसे ही करते हैं. Parents want them to enter inside the lectures, so they enter inside, but later on they don't attend lectures. They are physically present, but mentally they are absent students. Okay. Is this clear to all of you all now? Can I erase it? Yes, sir. Okay, fine. Don't cry. Ria, don't cry, Ria. Go to the next one. Students, ninth one. A good question. Anyone who can give an answer for the ninth one? So just give some minutes. Yes, Lovely, you can go ahead. Today, Lovely is responding so nicely, and Kashish is sounding very low. Kashish की तबीयत अच्छी नहीं, it seems. I'll read a question for the students. An athlete runs a distance of 1500 meters in the following manner. Students, you start from point A and you reach to point B. Let us say the total distance is 1500 meters. Starting from rest, so initial velocity is 0. Starting from rest, he accelerates himself uniformly at 2 meters per second square. So the acceleration with which he accelerates himself is 2 meters per second square till he covers 900 meters. Students, this is midpoint will be 750. Let us go for 900 somewhere over here. So this is point C. So he accelerates, students, he accelerates till 900 meters. He then runs the remaining distance of 600 meters at uniform speed. So now this distance, 600 meters with speed constant. Students, if I say uniform speed, so what is the acceleration? 0. Kya ye clear hua? How much is 900 plus 600? 1500. And so this is S1 and this is S2. He then runs the remaining distance of 600 meters at uniform speed. Calculate the time taken by the athlete to cover the 2 parts of the distance covered. So I need to find the time taken in the first part of the distance and time taken for the second part of the distance covered. Is the question clear to all of you all? Also find the time taken by him to reach the center of the track. Agar suppose मैंने यहाँ पे कोई midpoint लिया, students, center of the track. So how much is the time taken only to move from A to D? Where the distance covered in this case
is 750 meter. क्या ये clear हुआ students? Students question clear हुआ? हाँ या ना तो बोलो. Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir, clear. Also find the time taken by him to reach the center of the track. Now come on, everything is given on the board. You can use your equations, get your answer at the earliest. Let's see who's the most intelligent person. Fast. Come on, Purvi. Come on, Chanvi. Unmute yourself and answer. Yes, Alia. Amira. Amira, are you there, Amira? Amira, are you there? It seems Amira is not there in the lectures. I need to remove her. Oh, here's the answer of Labdi. See, I told you Labdi is answering since from beginning. Kashish, what are you doing? Labdi got the answer for the first one. Sir, I got the answer for all three. All three. You have posted only one. Sham is given for the answer. So, sir, we have to post. You have a see. Oh, you can answer also, doesn't matter, Labdi. Yes, students. Labdi has answered all three. Very good. Come on, tell me, Labdi, कैसे आएगा? Labdi, answer. So, the total distance is 1,500 meter. So for Kashish, I told Labdi to answer. Kashish, please don't say like that. I've told Labdi to answer. Let her answer. You're always Sir, supposed to answer. the Yeah, answer. Sorry. so हाँ, बोलो. for first 900 meter, U is 0, A is acceleration is 2 meter per second square. So S is equal to half 80 square. So 900 is equal to half into 2 into T square. That's why we will get T is equal to 30 seconds. Hello? Okay, you use the formula. Which formula you use? S is equal to UT plus. Half 80 square. Okay, in the first case, S1 is equal to UT plus half AT1 square. So this part is 0. So this is 900 into 2 upon acceleration is 2 is equal to T1 square. Absolutely correct. So T1 is equal to 30 seconds. And that, students, she has got the first answer. Sir, Absolutely can correct. we use V square equals to U square plus half? Half nahi 2as. So I said 2as. So that only. Yes, why not? You can get the velocity also. That is what I needed ना. अभी देखो ना यहाँ पे आके वो अटकेगी ना. Sir, for V is equal to U plus 80. That's why. अटकेगी देखो. कशिश अटकेगी. हाँ बोलो. So then V is equal to U plus 80. That's why we will get V is equal to 0 plus 2 into 30. That is 60 meter per second. Now she is Why using. to? But तुमने we can तुमने take लवली U. लवली तुमने हेल्प But- कर दिया. लवली तुमने हेल्प कर दिया कशिश. Sir. हाँ बोलो. Sir, taking 2as as subjects, we can also take as V square minus U square. Yeah, why not? You can take this also. V Then is we will equal get to the time answer, load sir. plus acceleration is 2 Into time 2. load per 2. So velocity is 60 meter per second.
So the velocity over here is how much? 60 meter per second. Okay, now The time taken from remaining the 600 meter, 600 by 60, that is 10. absolutely correct. Students, ये uniform speed है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? Speed is equal to distance upon time. So what exactly time will be equal to distance? कितना दिया है? 600. How much is speed you have got it as? 60. So what's the answer for time? 10 seconds. So for now remaining 750, 750 is equal to 1 by 2 into 2 into t square. वो अभी रूट में आएगा. Formula will be S is equal to UT plus half 80 squared. What's the distance for midway? The 750. Initial velocity क्या है? 0 है. ये पूरा 0 हो जाएगा. Half into acceleration कितना दिया है तुम्हें? 2. And students, this acceleration is till 900 meters. We are going for 750, so acceleration will be same throughout. Into what exactly we consider? T3 the whole square. Agreed? T2 and 2 will get cancelled. So can I say T3 will be equal to what? Root of 750. 25 threes are. I gotta get. So if in case if I happen to go for root of it, so what exactly will get it? Sir, Yes, 253 जा. क्या बात है? Such an intelligent girl. Where were you? Sir, Kashish? I am here only. You are telling my Okay. name is Labdi. Labdi, you are telling Kashish. You are only confused and you are confusing us also. No, because over here मुझे नाम अलग आ रहा है. मैं क्या करूँ करके पता नहीं आपके अंदर क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं. Last time also it was happening the same thing. That was somebody else entering into the lectures with that. कुछ तो हो रहा है. Something is going fishy. Okay. So answer Lavdi, you were saying it something. क्या 750 को कैसे बोल रहे थे तुम? हाँ सर. अभी कौन बोल रहा है ये? Who's saying it? Who's giving the answer for this? Labdi, Yes, answer 27.38. Okay, how do you find the square root? इसका square root कैसे निकालोगे? By root 30. Absolutely correct. Students, ये 25 3 से 75 होगा, तो ये होगा 25 into 30. तो T3 कितना होगा? 5 root 30. अभी root 30 की वैल्यू तुम्हें आनी जरूरी है. Your answer will be how much? 27 point what is it? 38. 4. Okay, 4. See, Lavdi was saying 4 and Kashish was so particular, 3 8, which is rounded up to 4. Oh, you have exchanged the names. What happened? Sir, आपने But it seems you have only exchanged our name. Oh, wait a minute. यहाँ पे तीनों आंसर्स दिया है and the name is coming something else. तीनों आंसर्स पोस्ट किया है कशिश ने एक सर साथ. तीनों आंसर मैंने पोस्ट किया है एक साथ. Okay, that's what ना कशिश का. सर मैंने भी किया है. यहाँ पे मुझे लवली दिखाई दे रहा है, कशिश का दिखाई नहीं दे रहा है. सर मैंने भी सर मैंने भी पोस्ट किया है लेकिन मैंने अभी आपको पोस्ट किया. कितना पहले किया था मतलब डायरेक्ट मैसेज मैंने तो किया. हाँ, लाप्ती ने तो not एवरीवन भेजा था. नहीं मैंने फिर डायरेक्ट मैसेज किया था तीनों. यार तीनों आंसर्स एक साथ में पोस्ट के लवली का मेरे सामने अभी चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल के तुम लोगों को दिखा सकता हूँ मैं दूसरे फोन पे. अरे हाँ तो सर मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ. मेरे पास भी है. मैंने भी आपको डायरेक्ट मैसेज किया है. Wait a minute, you all are all blaming in this case something bad. Something bad. Okay.
No C students. Can you see? Whose answer is this? All three together? Okay, सर मैंने 5 को भेजा था लब्धि. okay, fine. Fine. Okay. Please go to the next one. 10th and 11th students, okay?
Yes, anybody, students? So for retardation, we can use V equals to U plus AT. Absolutely correct. बहू को कुछ हो गया क्या? बहुत टाइम लगा रही हो अभी क्या है? Lovely, why so many people are speaking behind you? Sir, actually, I'm in a crowded place. अरे वो बाहर निकली इधर से So the question is, a vehicle starting from rest can accelerate uniformly at the rate of 10 centimeter per second square and can retard uniformly at the rate of 20 centimeter per second square. So in the first case, the motion is getting accelerated, students. And then it is getting retarded. Okay. In time t1 and in time t2. This is 20 meter per second. And this is 10 centimeter per second square. And the retardation is 20 centimeter per second square. So the acceleration is negative, students. ये देखो students, यहाँ से motion accelerate हो रहा है, यहाँ से retard होता है. Time taken for acceleration to reach the velocity to reach at 20 meter per second is t1. Time taken for the velocity to be brought to 0 is t2, and the motion is retarded, students. Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometers. You have to find out the least time, students, to complete the journey for of 5 kilometers. If maximum velocity attained by the body is 72, students, 72 kilometers per hour. 72 kilometers per hour, which I have written over here is 20 meters per second, students, into 5 by 80. Can anybody give an answer for this? Yes, anyone? So what you have asked? Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometers. Sorry, sir, your voice is not clear. It's cracking. Students, is my voice cracking? See, I've got the answer. I've just given the answer, 400 seconds. Yes, tell me. Can anybody find out T1, students? Can you find out T1 in the first case? T1 कैसे आएगा, students? V equals to U plus AT, which is 0 equals to 20 minus 0.2 into T, which is T equals to 100 seconds. क्या बात है? Who is this? Kashish? Yes, sir. Very good. It's V minus U upon T, that is acceleration. So final velocity, students, over here is 20. Initial is 0. Acceleration is given to you as 10. So can I say you'll get the time to be as how much? Acceleration, students, 10 centimeter है, students. ये 10 into 10 raised to minus 2 हो जाएगा. Meter square में करना है तो. Students, now it will be 20 into 10 raised to 2 upon 10. So students, what exactly the time taken will be equal to how much?
200 seconds. क्या ये clear हुआ students? Students, this is 10 centimeter per second square. I've converted into meter per second square. Students, is this clear with everybody, the first part of the time taken? Yes. What is the time taken for the second case? For the second case, कितना होगा? What exactly? Same formula. It will be v minus u upon acceleration. Final velocity is 0. How much is the initial velocity I can consider in this case? The initial velocity I'll consider will be in 20 meter per second. Absolutely correct. Acceleration is how much? Minus 20. When I say minus 20, it is in centimeter. Convert into meter. 10 raised to minus 2. So what exactly time taken in the second case, students, will be equal to 100 seconds. So I've got T1, I've got T2, students. Is this clear? Yes. Okay. Now can you tell me what exactly the distance covered in this case? What exactly the distance covered? So can I say area under the graph? Students, area under the graph is a distance covered, and that is half into base. Agreed? Into height. Agreed, students? Yes, sir. So what is the total distance covered? 3000 meters? Means can I say Yes, this sir. is meters? Ayana, Yes, sir. क्या ये सबको पता चला students? What is area under the graph? Area under the graph नहीं पूरा. So much. Who is talking? Can't you tell somebody to keep mum? Area will be equal to half into base into height. So base will be 300, height is 20. We can get 3. यानी students ध्यान से देखो. यानी अगर तुम distance 300 किलोमीटर लेते हो, 300 kilometers. So what is the distance? What is the time taken for this? T1 plus T2. T1 plus T2 total time taken is 300 seconds. Agree, students? Yes. Yes, sir. Now what exactly you need? What exactly you need? You need for 5,000 students. You need it for 5 kilometers. Total time taken for 5 kilometers. How do you go about with that? Bolo? Yes, Labdi, you had answered 400. Kaisa hai 400, Labdi? Sir, we can minus 5 kilometer minus 3 kilometer, which is 2 kilometer. Okay. So 5 minus 3, that will be 2 kilometer. Sir, I have not taken it into kilometer. I have taken it in meter. So I have done it for s equals to 5,000 minus 3,000, which is 2,000, and t equals to 2,000 by 20, which is 100. So t Okay, equals to 2,000 meters. 200 plus 100 plus 100. Okay, time is equal to what we consider as? Time is equal to how much we consider as? It's distance upon speed. So what exactly will be 2000? What the speed is? What's the 20. answer? 20. Agreed. 100 seconds. Yeah, Yes, students. sir. For the first 3 kilometers, time is 300 seconds, students. For the next 200 meters, time is 100 seconds. That is 2 kilometers. So for 5 kilometers, what is the total time? The total time will be 300 plus 100. What's the answer? Is this clear to all of you all? Yes, sir. Everybody, Om, is it clear with you? Om, Yes, sir. Yash. Tejas, Yash, is it clear? Yes. Amira, you are not replying, Amira, yet. Amira, you're not replying, Amira. Yes, sir. Where are you, Amira? तुम लेक्चर में नहीं हो, कब से मैंने पूछा है, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो. No, sir. No. I was in the lecture only. Where do you stay? Which branch? Mira Road. M4. And do you come for the lectures over there at the center? Yes, sir.
ओके, तो अभी मैंने कब से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं तो अभी तुम्हें वापस वेटिंग रूम में डालने वाला था, मतलब पता नहीं नहीं, नेटवर्क। नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सर घर में, इस वजह से। और मैं लेक्चर देख रही हूँ आपका। ओके फाइन, हम्म। so that is what, because I wanted to speak to your parents कि क्या सच में नेटवर्क इशू हो रहा है कि क्या है, because you are not replying at all consistently. I was asking. Okay, shall I erase the students? Students, can I erase it? Amira, can I erase it? यस Amira, can सर। I erase it? यस सर। क्या हुआ? Okay, the last question, students, 11th one, fast. Can anybody give the answer for the 11th one, students? A train starting from rest accelerates uniformly for 100 seconds, runs at a constant speed for 5 minutes, and then comes to rest with a uniform retardation in next 150 seconds. During motion, it covers a distance of 4.25 kilometers. Find the constant speed, acceleration, and retardation, students. Can anybody get it? Now, come on, any of the guys, please, any of the guys can answer. I want some of the guys to put forward. Mang, what about you, Mang? Dishant, Dhruv, Yash, Vishal, Tejas, Soham, Shyam, Om. Come on, guys, what are you doing? Friends, ये वाला question देखो जो 11th वाला मैंने अभी पूछा है तुम्हें. Can I say your 11th question is almost identical to that of your question number 7th? I'll just draw the graph. Now see over here, Labdi has answered. So far she has answered, but her answer is, wait a minute. Her answer is, wait a minute. Labdi, wait a minute, wait a minute. Oh, the first answer is correct, Labdi. Your second answer is incorrect. No, first answer is correct. Second answer is also correct. Both are correct. Very good. Students, have a look into the students. I'll show you the diagram representation, students, graphically. A train starting from rest accelerates uniformly for 100 seconds. If I say accelerates uniformly, yes, lovely. The next answer is also correct, absolutely correct. Since we're doing the 11th question, now when you look into it, students, have a look at the graphical part of it. Students, they've given you a train starting from rest. So initial velocity of the train is 0, students. This is the velocity we consider on y-axis. Starting from rest, accelerates uniformly for 100 seconds. Students, let us say for time 100 seconds. The motion is getting accelerated. Agreed? Runs at a constant speed for 5 minutes. If I say 5 minutes, 5 minutes means, can I say it'll be around 300 seconds? That means now for 300 seconds, what exactly? The train is going with a constant speed. So let us say this time, this is T1, this is T2, that is equal to 300 seconds. Agreed? It goes with a constant speed. And then comes to rest with a uniform retardation in next 150 seconds. In next 150 seconds, T3, it is brought to rest. तो कैसे ये ऐसा जाएगा ग्राफ और फिर यहाँ से ऐसे चला जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? T1, T2 and T3 स्टूडेंट्स.
Is this clear? Yes, sir. यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव होगा. Now see further. During its motion, it covers a distance of 4.25 kilometers. 4.25 kilometers. Riya, you said yes, sir. मुझे बताओ 4.25 किलोमीटर यानी टोटल डिस्टेंस दिया है. तो कैन यू टेल मी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इज इट स्लोप ऑफ द ग्राफ या एरिया अंडर द ग्राफ? So, हाँ, स्लोप ऑफ द ग्राफ लोगे या एरिया अंडर द ग्राफ, टोटल डिस्टेंस? area. Very good, Riya. See, students, she is answering. Absolutely correct. That is the area under the graph. और एरिया अंडर द ग्राफ अगर तुम दोगे तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट आ जाएगा. देखो यहाँ पे देखो ना, गो फॉर यूनिट स्टूडेंट्स, ये मीटर पर सेकंड में. Agreed? So once again, I'll read. A train starting from rest goes 100 seconds with accelerates uniformly. Okay, from rest accelerates uniformly for 100 seconds, runs at a constant speed for 5 minutes, and then comes to rest and return. During motion, it covers a distance of so and so. पूछा है, what is the constant speed with which it moves? What is the acceleration and what is the retardation? ये सब पूछा गया है. Total distance is 4250 meters. समझ में आया students? Which is how many kilometers multiplied by 1000, so it's 4250 meter. Now, can anybody answer to the students? Yes, come on, anybody else? Sir, it is half into 450 plus 200 into Vmax. Absolutely correct. Half into 450. Students, ये देखो ना, ये area under the graph क्या होगा? Students, area under the graph will be area of trapezium. That is half the sum of parallel sides. Students, ये देखो ना, ये पूरा parallel side हुआ. Let me name the triangle. Let me name the trapezium. Suppose अगर मैं उसको P, Q, R, S, T and U लेता हूँ students, so can I say these are parallel sides? तो half the sum of parallel sides, can I say एक parallel side QR हुआ प्लस दूसरा parallel side हुआ PS into height क्या हुआ? या तो आप QT ले लो या RVU ले लो. Anything you can put, doesn't matter. यानी स्टूडेंट देखो ना, प्रोडक्ट आया ना, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है? QR and PS. Can I say this is time? और टाइम किसमें मेजर होता है? सेकंड्स में. What about Q and T? So this is in meter per second. Second and second will get cancelled. What's my answer will be in meter. यानी स्टूडेंट्स तुम्हें डिस्टेंस दिया, यानी 4250 is equal to half sum of parallel sides. How much is QR given to be? Can I say it's a rectangle? It's a rectangle. How much is QR? QR is equal to TU. How much it is? 300. How much is PS? How much is PS? 300, 400, 500, 550. How much is QT? QT and RU is what? It's the velocity final. Students, can I get V? Students, can I get constant speed? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Area of trapezium is half the sum of parallel sides into height. हाँ या ना? Yes, sir. Clear, sir. देखो ना स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. ट्रेपीजियम लेते हो तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ये एक आता है और ये आता है. और ये क्या है? क्यूआर कितना होगा सर? क्यूआर यानी ये डिस्टेंस आ गया, ये 300 सेकंड है, ये सेकंड्स में है. ये पूरा कितना हुआ?
सर ये 400 ये भी पूरा सेकंड्स में आ रहा है, ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, तो आंसर तो तुम्हारा मीटर में आएगा इन दैट केस रेजिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करो, 5 6 7 8 850, what exactly your velocity will be equal to 4250 into 2 divided by 850. Do we have any cancellation? Yes. देखो 425 and 85 we consider. हाँ students? Yeah, 425 twos are agreed. 850 and 2 tens are. What's my answer? Did we get the velocity as 10 meter per second, students? क्या ये clear हुआ students सबको? Yes. अबे देखो तुम्हें आंसर मिल गया, देखो कांस्टेंट। नाउ कैन यू फाइंड आउट ए? कैन यू फाइंड आउट ए? हाँ सर, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है? हाँ सर, ए का फॉर्मूला होगा v minus u upon t1। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हाउ मच इज v? सर v मुझे मिला है 10, u कितना मिला सर? u तो 0 है। टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट केस कितना है? 100 seconds। तो कैन आई गेट माय आंसर फॉर एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट केस? यस, 10 upon 100, 0.1 meter per second square। देखो आ गया तुम्हारा आंसर, मोशन इज एक्सेलरेटेड। what is the constant speed with its moving? The answer is 10 meter per second। स्पीड कितना है तुम्हारा? so that is 10 meter per second is the speed। अभी ये रिटार्डेशन के लिए जा रहा है, तो ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और ये फाइनल होगा। what is acceleration? v minus u upon time taken is t3। how much is final velocity? 0। इनिशियल कितना है? 10। कितने टाइम में हो रहा है? 150। so students, can I get my acceleration in this case? yes, minus 10 upon 150। what's my answer? What's my answer? 1 upon 15 का आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स? (0.067 meter per second square। So is your acceleration negative? Yes, motion is retarded। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, are you getting Yes, it? sir. We got positive acceleration, we got constant speed, and we got negative acceleration। v minus देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना दिया हमें? 10 मिला है। टाइम टेकन फ्रॉम यहाँ से यहाँ पे 150 सेकंड्स है, तो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया, तो रिटार्डेशन कितना हुआ? 0.067। Very good, Labdi, you had answered long before। Kashish, you also answered। And Riya, very good that you said about the area under the graph part of it। Can I erase this, students? इसको मैं erase कर दूं अभी? Students, can I erase it? Yes, sir. Okay, fine। Now, students, I wanted to go for the last part of the exercise, students, okay? Have a look on page number 121, students, right now. Page number 121. Have a look into page number 121. Everybody on page number 121, students, okay? Students, try to solve question number 12. I'm putting back over here, students. Solve question number 12, question number 13, and question number 15. Students, solve 12, 13, and 15. Page number 121. That's the last exercise of your chapter. Fast. And these are simple based on the students' relative velocity we consider, and these are speed of a boat and river, students we consider river boat and or swimmer and river। इसको erase कर दो students, ये erase कर दो अभी मैं। Can I erase this? Yes, sir। Okay।
So it's given to you that if a man is swimming across a river and reaches a point directly opposite in time t1, he swims an equal distance downstream and covers the distance in time t2. Students, यानी दो cases दिया है. Students, I'll just try to show a correct diagram. अगर मैं diagram दे दूंगा तो I do think you might be able to trace it. Students, अगर मुझे बताओ, a man swims across a river and reach a point directly opposite in time t1. यानी students ये सोचो कि ये bank of river है ना? ये width of the river हुआ, इसको हम बोलते हैं width of the river. Agreed? अगर स्विमर पॉइंट ए से मूव हो रहा है स्टूडेंट्स, और उसको ध्यान से सुनना, उसको बी की तरफ मूव करना है, ओके? तो उन्होंने बोला a man swims across a river and reaches a point directly opposite in time t1. अगर स्विमर को ए से मूव करना है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, और उसको बी पे पहुंचना है, ओके? एंड देयर इज अ स्ट्रीम. There is a stream. If the speed of man in still water is v and the speed of the river, and there is a speed of the river is also flowing. Students, ये सोचो कि रिवर करंट का स्पीड इस तरफ जा रहा है. अज्यूम, ये अजम्पशन है, तुम इस तरफ भी ले सकते हो, मैंने इस तरफ ले लिया. एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, ये रिवर करंट है, ओके? तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर रिवर करंट इस तरफ जा रहा है और अगर स्विमर को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पहुंचना है, तो कैन यू टेल मी, should he go exactly perpendicular to reach to A to B, or should he go at a certain angle with the vertical? Students? Certain angle. Very good. यानी अगर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर सपोज ये बंदा यहां से सीधा जंप मारता है सीधा जाने के लिए, तो क्या वो सीधा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना. ये रिवर करंट उसको ड्रैग करते हुए कहां की तरफ लेके जाएगा? बेचारे को यहाँ पे लेके जाएगा. समझ में आ रहा है? ये रिवर उसको ड्रिफ्ट करते हुए यहाँ पे लेके जाएगा, फिर इस बेचारे को वापस चल के इस तरफ आना पड़ेगा. तो अगर उसे बी की तरफ पहुंचना है तो कहने से he will actually swim in this direction. तो कहने से this becomes velocity. This becomes velocity of what? Man with respect to river current. Is that clear? Now, if I happen to go for it, this is the velocity of the river current I'll consider. Agreed? That is given to you. Let me take this as U. इसको मैं लेता हूँ U. Are you getting it? इसको मैं लेता हूँ V. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. और उन्होंने ये बोला, ये पहला केस है, ये फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस है, ये केस 1. उन्होंने बोला है टाइम टेकन फॉर द पर्सन टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज हाउ मच? t1. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? Is this diagram clear to all of you all? कशिश थोड़ा सा उल्टा हो गया तुम्हारा. कशिश तुम्हारा आंसर थोड़ा सा रिवर्स हो गया. स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ. डोंट जस्ट से इट यस. अगर नहीं समझ में आया तो वापस मैं बताऊंगा. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? The W is the width of the river current. The person wants to go from A to B. He moves in the direction towards this point. Let us say that is V. The speed of the river current is U. Time taken for it to reach is T1 in this case. So now can I say, ध्यान से सुनिए, तुम्हारा first case है. Second case में उन्होंने क्या बोला है? If he swims an equal distance downstream. Students, अभी देखो, second case में क्या है? Second case में वही width है. Students, width of the river current वही है. I get it. Width of the river current वही है. This is the width of the river current, students. Agreed? But now in the second case, what exactly? If he is trying to move with a speed v, what is the speed of the stream? U. और ये कौन सा है? Downstream. उसी डायरेक्शन में जा रहा है. स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स. यानी अभी ये यहाँ से यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है. It is going along with the stream. Going along with the stream. The person is swimming in the direction of the stream.
Am I getting it? And in this case also he covers the same distance, students. Okay, if the distance covered in this case also, it's the same in that case. Am I getting it? So now if in case the time taken over there is how much? यहाँ पे time taken will be T2. And what is exactly the time taken? Time taken to cover distance equal to width of river current. Agreed? In T2 it covers the distance equal to river current. क्या ये दो conditions clear हुआ students? हाँ students? Yes, sir. Please all the students inside the group, किसी को भी कुछ भी doubt हो, कुछ भी confusion हो, right now you ask me. कुछ भी एकदम silliest doubt हो, बिंदास पूछो, don't get tensed up, please students. लेकिन एकदम concept को clear करो यहाँ पे. वापस बोल रहा हूँ, ये है बैंक ऑफ रिवर, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो तुम इस तरफ डाइव मारोगे, तुम यहाँ पे डाइव मारोगे तो रिवर का जो फोर्स होगा उसकी वजह से तुम यहाँ पे जाओगे, तो ये तुम्हारा एक्चुअली डिस्टेंस कवर हुआ है ना. यानी तुमने जो डिस्टेंस कवर किया वो तो भले तुम इतना लंबा गए हो भाई, लेकिन तुमने जो कवर किया एक्चुअल डिस्टेंस तो यही बगे ना, तुमने लंबा किया क्योंकि तुम स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे थे. अगर तुम यहाँ पे जाना चाहते हो और तुम यहाँ पे टाइम आते तो और पीछे चले जाते, फिर तुम्हें चल के जाना पड़ता. तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो रिवर का स्पीड यू है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज बी, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज t1. तो स्टूडेंट्स कैन आई गेट माय फर्स्ट रिलेशन? ध्यान से सुनना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्टूडेंट्स यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो व्हाट इज द टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस? Time taken, what is the distance covered? So distance covered is equal to the width. Agreed? Distance covered equal to the width. And what exactly the speed? So the speed, the effective speed, ये जो width है वो ये है. जिस डायरेक्शन में width है उसी डायरेक्शन का स्पीड चाहिए ना हमें. तो देखो भाई, theorem of Pythagoras can I say v square plus u square is equal to question mark square. So what is question mark square? Under root v square minus u square. क्या ये clear हुआ सबको? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन मार्क द होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर. मुझे ये डिस्टेंस कवर करना था, तो व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट्स द डिस्टेंस कवर्ड. That is for distance, width, the time, the velocity during that time will be this, क्योंकि तुम्हारा पूरा इक्वेशन वेलोसिटी में होना चाहिए. तो अगर किसी ने पूछा what is the velocity effectively to move straight, ये आंसर होगा. क्या ये इक्वेशन क्लियर हुआ सबको? हाँ सर, समझा. Yes, अभी sir. सेकंड केस में टाइम कितना होगा? सेम. टाइम टेकन इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मुझे बताओ यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना था? द डिस्टेंस कवर्ड वाज इक्वल टू द विड्थ. यानी स्टूडेंट जो ये डिस्टेंस था ना, वही यहाँ से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल उतना ही डिस्टेंस लिया है, भले विड्थ ये है. स्टूडेंट्स अगर विड्थ ऑफ द रिवर करंट सपोज अगर 10 मीटर है, तो ये बंदे ने स्विम किया 10 मीटर इस तरफ अलोंग द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम. और मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर कोई स्विमर स्ट्रीम के साथ में जाता है तो उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर स्पीड ऑफ द स्विमर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ये होगा कि नहीं इफेक्टिव? डिस्टेंस क्या होगा? सर डिस्टेंस आपने बोला था इक्वल टू व्हाट? अगर ये 10 मीटर है तो वो हॉरिजॉन्टली 10 मीटर गया है. हाँ सर, तो ये तो विड्थ ही आएगा. What exactly the time taken? So time का फॉर्मूला is distance upon speed. तो कहने से W upon V plus U, ये डाउनस्ट्रीम का हो गया. अगर यही क्वेश्चन में चेंज करता, the swimmer is going upstream, तो मुझे V minus U मिलता, ना कि V plus U. क्योंकि स्विमर जा रहा है अपस्ट्रीम, अगेंस्ट स्ट्रीम जा रहा है स्टूडेंट्स, और वो स्विम कर रहा है, इसलिए V will be greater than U. तो क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, अगर अपस्ट्रीम में आया तो ये V minus U हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में आया तो V plus U हो जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ? टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस एंड टाइम टेकन इन द सेकंड केस. Is this clear to all of you all?
Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. Please, everybody, not only two of them. I'm not teaching only two of them. The strength was 24 to 25. 3 students already have moved out. I really am feeling it much more like that. उनको पहले से निकाल देना चाहिए था. And I do feel so that is Janvi only. Janvi is there. Thank you, Janvi. You are still there. Who's at one? Who's out? पता नहीं चलता तुरंत. There are 3 to 4 students who are out. What about you, Yash, Tejas, Soham? Are you understanding? Shyam? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Sakshi, what about you? Riya, what about you? Yes, I understood. Okay. Rakshanda, Prachi. Yes, sir. Prachi, what about you? Prachi, are you there, Prachi? Prachi, are you there? Prachi, are you there? Prachi, are you there? I'll throw you out of the lectures, Prachi, if you don't reply. If you don't reply, Prachi, I will not keep you to the lecture. Unmute yourself. No, I don't want all the stupidity. I want you to unmute. This is what the problem is. They just type in and they think that they are too smart enough. Now, students, question क्या पूछा उन्होंने? Find out the ratio of the time taken in the first case and second case. दोनों का ratio निकालो चलो. तो कहने से T1 upon T2 W upon root of V square minus U square divided by, तो ये V plus U हो जाएगा upon W. W will get cancelled, students. तो कहने से T1 by T2. अगर ये रूट के अंदर ले लिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? V plus U तो होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स. Therefore T1 upon T2 will be root of, this is V plus U the whole square होगा students, and this is A square minus B square, so it's A plus B and A minus B. So this will getting cancelled. So what is the answer of T1 by T2 will be equal to root of V plus U upon root of V minus U. And Labdi, your answer was incorrect. You wrote it U minus V. Are you getting it, students? क्या ये clear हुआ students आपको? हाँ, sir. Sir, U is the water current, right? Yes, U is the speed का. और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना कि बंदा जब भी ओवरकम करता है रिवर करंट को, तो V has to be greater than U. यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर करंट है, तो V आएगा ये. और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V प्लस U. और वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये स्विमर सेकंड केस में जो कवर करता है, विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड अक्रॉस द विड्थ. यानी अगर विड्थ ऑफ द रिवर करंट 10 मीटर है तो हॉरिजॉन्टली वो 10 मीटर ही कवर कर रहा है. कंपैरिजन बिटवीन द विड्थ इज सेम. तुम ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पे आपने W के लेगा, W तो ये डिस्टेंस है, बंदा तो ऐसे स्विम कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल स्विम कर रहा है, तो आपने W क्यों विड्थ लिया? तो मेरा कहना ये है कि भले बंदा हॉरिजॉन्टल स्विम कर रहा है, तो उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखा है वो इक्वल टू द विड्थ रखा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम सेज. व्हाट फ्रेंड्स, क्लियर हुआ प्रॉब्लम? हाँ सर. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये प्रॉब्लम रॉकेट साइंस था? और ये प्रॉब्लम किसको आता मालूम है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना. सबसे पहले व्हेन अ स्टूडेंट नोज द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको आना जरूरी है. दूसरी बात, जब भी कोई स्टूडेंट्स को क्लास 10th के प्रॉब्लम्स मैथ्स में तुम लोग ने किया होगा, रिवर बोट, बोट कमिंग डाउन द स्ट्रीम एंड अप द स्ट्रीम, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स किए स्टूडेंट्स? डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है, अगेंस्ट नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन. मैथ्स में प्रॉब्लम्स किए कि नहीं किए स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स? हाँ सर. हाँ, तो फिर वो वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पे यूज होता है, वो वाला कंसेप्ट यूज होता है. एंड यू डोंट एक्सपेक्ट दैट कंसेप्ट अ स्टूडेंट शुड बी टोल्ड. दूसरा क्या था? दूसरा तो लॉजिक था ना. बंदे को अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो वो सीधा स्विम नहीं करेगा भाई.
ये अगर 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 रिवर फ्लो इस तरफ जा रहा है तो वो सीधा स्विम कर ही नहीं सकता। हाँ, अनलेस एंड अनटिल ही इज अ ही मैन, अ बैटमैन, सुपरमैन, है ना, आयरन मैन, ऐसा कोई टाइप का मैन होगा तो वो स्विम कर सकेगा, लेकिन नॉर्मल बीइंग के नॉट। आर्म्स के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि रिवर करंट आ रहा है और बंदा सीधा चला जाएगा। नहीं, जैसे रिवर करंट आएगा तो वो यहाँ से अगर शुरू भी करे सीधा जाने के लिए तो यहाँ पे पहुंचेगा बेचारा, उसको तो जाना था सीधा। आई गेटिंग इट? सो दैट इज ओनली पार्ट। और फिर तुम्हें ये लिखना है कि टाइम के हिसाब से तुम्हें करना है, बस दोनों को रेशियो लेना था। Now solve students the next question. 13th question is a very good one. A student who's really good in physics will be able to score 13th one very properly. इसलिए मैंने 13th question उठाया students. क्या मैं इसको erase कर दूं? Students, can I erase this? हाँ सर। Yes, sir. Now solve 13th one. Let's see who's solving the 13th one. Come on, Ria, answer Ria. Absolutely correct. Kashish has got the answer. This student so good, she has got the answer. चलो कशिश बोलो कैसे करोगे? 1 second, sir. Students, Kashish is really good, huh? Underestimate करना. Labdi, are you there, Labdi? Sir, she went to washroom actually. She said me. हाँ?
Yes, यानी sir. वो लेक्चर में है ही नहीं, मैं उसको अभी बाहर Sir, निकाल अभी Labdi, are you there? Labdi, are you there? Labdi, are you there? Labdi, are you there? She's not answering. I'm putting into waiting room. But sir, she is in the washroom. Okay, fine. लेकिन ऐसे नहीं करता ना लेक्चर्स में ये okay, fine. चलो तुम आंसर दे दो. Okay, sir, yeah, it is a vector formula, sir. A vector sum. ऐसे लिखेंगे. Then has to go off from point A. ये है तुम्हारा नॉर्थ. एग्रीड. ये हो जाएगा वेस्ट, ये होगा ईस्ट और ये होगा साउथ. नाउ टेल मी. An aeroplane has to go from point A to another point B 500 kilometers away due 30 degrees east of north. Students, 30 degrees east of north का मतलब क्या? Anybody? It forms a 30 degrees with respect to north or 30 degrees with respect to east? 30 degree with respect to east. Wrong. 30 degrees, ध्यान से read करो. 30 degrees east of north. Students अभी ध्यान से रखना. हमेशा जब भी angles देते हैं, listen carefully. एक second, everybody hold it. अगर कभी लिखा है 30 degrees east of north, ऐसा अगर कोई वर्ड आता है तो हमेशा ऑफ नॉर्थ लेना जरूरी है. यानी नॉर्थ से 30 डिग्रीज लेना जरूरी है. तो ये कितना हो गया? ईस्ट से 60 डिग्रीज, टोटल 90. यानी कशिश तुम्हें सही कैसे मिला? एक क्वेश्चन मार्क मुझे लग रहा है. Actually, sir, क्या है ना, मुझे बोलने नहीं आया. अरे सर वेट, मुझे बोलने नहीं आया. मैंने मतलब ऐसे मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आया. मैंने क्लियरली पूछा कि 30 डिग्रीज आप ईस्ट से लोगे या नॉर्थ से लोगे, तो तुमने क्लियरली बोला ईस्ट. यानी ये सर हमेशा क्योंकि वो मैंने लाइन ईस्ट में बनाई है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि ईस्ट से लेंगे. तो ओके. लब्दी अब मुझे बताओ, अगर मैंने दिया है 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ, तो दिस 15 डिग्रीज फ्रॉम वेयर? लब्दी आर यू देयर? लब्दी आर यू देयर? देखा, वो है ही नहीं. आई एम रिमूविंग हर नाउ. आई एम रिमूविंग सर हर. वेट फॉर सच. नो, शी इज फूलिंग अराउंड. जानबूझ के निकल गई है. ओके. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ, उसका मतलब 15 डिग्रीज इज वेयर? स्टूडेंट्स, 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ का साउथ मतलब? के वेस्ट से. साउथ के साउथ के वेस्ट. वेस्ट नहीं, यू आर गोइंग टू मेजर 15 डिग्रीज From south. यस, फ्रॉम साउथ. यानी अगर तुम ये साउथ ले रहे हो, अगर तुम साउथ ले रहे हो स्टूडेंट, तो यहां से तुम्हारा, और ये क्या वेस्ट है ना, तो ये तुम्हारा 15 डिग्रीज होगा. समझ में आ रहा है? आई गेटिंग इट स्टूडेंट्स? ये हमेशा ध्यान में रखना. ऑफ जो होगा ना, उसके रिलेटेड तुम्हें जाना है. ओके. Now let us see what are the questions, students. Look at the question. So now students, look over here. An aeroplane has to go from point A to another point B, students. Okay, 500 kilometers away due 30 degrees east of north. Okay, 30 degrees east of north. And how many kilometers, students? 500 kilometers. यानी actually उसको A से B की तरफ जाना है students. ध्यान से सुनना. पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ उसको पहुंचना है, प्लेन को, एयरक्राफ्ट को. और वो कितना है? 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स. उसी टाइम पे विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन? इज 150 मीटर पर सेकेंड. यानी स्पीड ऑफ द प्लेन इन स्टिल एयर. यानी हुआ क्या स्टूडेंट? ध्यान से सुनना. एयरक्राफ्ट ए से टेक ऑफ कर रहा है. अगर सपोज विंड ब्लो नहीं कर रहा, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, एवरीवन लिसन केयरफुली. अगर सपोज विंड ब्लो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे एयरक्राफ्ट का स्पीड कितना है? एयरक्राफ्ट का स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर. यानी स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट अगर तुम देखोगे
तो एयरक्राफ्ट शायद ये है एयरक्राफ्ट, और ये जो एयरक्राफ्ट है शायद इस डायरेक्शन में जा रहा है। एग्रीड? It's going in this direction. Let us assume in this direction. लेकिन उसी टाइम पे विंड ब्लो कर रही है। स्टूडेंट्स, विंड ब्लो कर रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 150 मीटर पर सेकेंड, जब भी विंड ब्लो ही नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नाउ विंड इज ब्लोइंग, स्टूडेंट्स विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ विंड जा रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये विंड जा रही है, ये विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग। किस तरफ जा रहा है विंड? इट्स गोइंग ड्यू नॉर्थ। ये जब भी विंड ब्लो होगी तो कहना से वो एयरक्राफ्ट को ड्रिफ्ट कराएगा, है ना। यानी अगर ये वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है और अगर ये विंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, स्टूडेंट्स wind is going in this direction due north, so can I can say that this is the velocity of the wind. How much it is? 20 meter per second, students. Is it going due north? Yes, it's going due north. Is this the velocity of the aircraft? Yes, it's the velocity of the aircraft. Do you find out the resultant? Why not? ये देखो ना, एक वेक्टर हुआ स्टूडेंट्स, टेल हेड, टेल head, tail of the first vector to head of the second vector. ये देखो पॉइंट A, ये पॉइंट C, ये पॉइंट B। एक्चुअल एयरक्राफ्ट को यहां से यहां पे पहुंचना है स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट को यहां से यहां पे पहुंचना था 500 किलोमीटर, लेकिन एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ लिया यहां पे। ये एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ था, एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ यहां पे लिया, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। उसी टाइम पे विंड ब्लो कर रही थी, तो विंड की वजह से एयरक्राफ्ट ने अपना ड्रैग ले लिया है एट एन एंगल थीटा। एयरक्राफ्ट ने अपना एक ड्रिफ्ट ले लिया एट एन एंगल थीटा। तुम्हें ये एंगल थीटा पूछा गया है। अभी समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? हाँ स्टूडेंट्स, इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ले रहा है, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ले रहा है ए से। एग्रीड? अगर हवा ब्लो नहीं कर रही है तो उसकी स्पीड थी 150 मीटर पर सेकेंड। आई गेटिंग इट? लेकिन हवा की स्पीड की वजह से उसको एक ड्रिफ्ट मिला, और ये एयरक्राफ्ट उस ड्रिफ्ट की वजह से उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया और वो इस तरफ चला गया। तो कितना ड्रिफ्ट हुआ ये पूछा गया है। अभी समझ में आया क्वेश्चन? Where is the wind blowing? So the wind is blowing in this direction, in this direction, in this direction. That means very exactly due north. What is the speed? 20. What is the wind? What is the speed of the aircraft in still air? 150 meter per second. Did the aircraft reach to its destination B? Yes. Due to this drift. How much is the distance covered from A to B? Yes. 500 kilometers. What is the question asked? Find the direction in which the pilot should head with respect to line A, B to reach at point B. Are you getting it? तो तुम्हें डायरेक्शन, तुम एयरक्राफ्ट इस तरफ जा रहा था तो उसको किस तरफ जाना है? इस तरफ जाना है। It has to direct towards B. So I need to get the value of theta. Now can you get an answer, students? Yes, anybody? Anyone? Yes, lovely. Can you answer? Lovely, are you there? Sir, 150 by sine 30 and 20 by sine theta.
Very good. Now I'm asking Lavdi. Are you there, Lavdi? Yes, sir. Okay. तुमने कौन सा रूल यूज किया साक्षी? Do you Law recollect? of sines of triangle. Well, she has used Lam's theorem. Please students अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. Students, what is Lam's theorem? और ये हम लोग ने बेसिक मैथ्स में किया है. Everybody listen carefully. ये मैंने बेसिक मैथ्स में फॉर्मूला दिया भी है. Students, मुझे बताओ, is the wind blowing due north? हाँ students, is the wind blowing due north? Yes. What is the speed of the wind? Due north, है ना? मुझे बताओ, कहने से this is actually forming an alternate angle. ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्रीज है स्टूडेंट्स. तो कहने से ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. एवरीबडी लिसन केयरफुली. ये नॉर्थ की तरफ है, ये भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये 30 डिग्री. तो कहने से इट फॉर्म्स z. ये भी 30 डिग्रीज होगा. हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? तो अगर ये 30 डिग्रीज है तो कैन आई टेक दिस एज 30 डिग्री स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. ऑल्टरनेट एंगल्स हुआ. अभी देखो, तुम्हें ट्राइंगल मिला है स्टूडेंट्स. ये देखो ट्राइंगल एबीसी में तुम्हें ये एंगल मिल गया है 30 डिग्रीज. तुम्हें ये एंगल पूछा गया है. यहाँ का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ का स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड. तो कैन आई यूज Lam's triangle students? And what exactly Lam's triangle we consider is, it is sine 30 upon opposite side. What exactly the opposite side is with what we consider that it's the speed of 150 meter per second equal to sine theta upon what is the speed opposite to it? 20. ये तुम्हारा Lam's rule हो गया. स्टूडेंट्स, Lam's rule के अंदर I made it very clear. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है स्टूडेंट्स, तो अल्फा बीटा गामा ए बी सी साइन अल्फा अपॉन ए. स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है Lam's थ्योरम का? ध्यान से सुनना. एंगल और उसका ऑपोजिट साइड. साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, साइन गामा अपॉन सी, ऑल आर इक्वल रेशियोज. और ये हम लोग ने क्या पढ़ा था? whenever vectors are coplanar students and they meet at one point, so summation of all the vectors at that point is equal to 0. और वहां पे तुम्हें एक Lam's थ्योरम का रूल एप्लीकेबल हो सकता है स्टूडेंट. सो ये है तुम्हारा Lam's थ्योरम. जो एंगल होगा उसके सामने वाला साइड लेना. अभी ये साइड डिस्टेंस में क्या है? वेलोसिटी है, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट. स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइन ऑफ 30? साइन ऑफ 30 इज हाफ. तो कितना हो जाएगा सर? 1/300 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 20. टू हाउ मेनी जा? 15 जा. व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स ऑफ 1/50. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? And when you solve this, students, how much you'll get sine inverse of 1/15 students? Theta you'll get it as 3.8 degrees. यानी स्टूडेंट्स, ये 3.8 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है. यानी एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कैसे लिया था? एयरक्राफ्ट ने जो टेक ऑफ लिया था वो 33.8 डिग्रीज का था. लेकिन विंड की वजह से वो 3.8 डिग्री टिल्ट हुआ और फिर अपने डेस्टिनेशन बी तक पहुंचा. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Can I erase the students? Sir, wait a minute. Okay. We'll start the last one, 15th one. Students, can you remember these names for the next lecture? Can anybody remembers right now the people who are there into the lectures? There is hardly 7 minutes. Yash, Tejas, Soham, Shyam, Sanya, Sakshi, Riya, Prachi, Paneri, Mayank, Labdhi, Kashish, Chanvi, Dhruv and Anju. और जो स्टूडेंट्स निकल गए हैं नेक्स्ट टाइम उनको मैं अंदर लूंगा ही नहीं. Okay, I will not let them to enter inside. So please remember these names, please. One of you all can tell me which are the students who are out. Okay, because there were around 24. ये नाम ध्यान में रखना students. Keep these names please in mind. Will you all do that? Students? हाँ या ना?
अरे हाँ या ना तो बोलो. ओके, वेरी गुड. तो मुझे बता देना, एक लिस्ट करके डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज देना कि सर ये सारे नाम नहीं थे लास्ट लेक्चर में, तो I'll throw them out and nobody is going to inform them. इसको erase कर दो स्टूडेंट्स. Can I erase this? Sir. Okay. Questions, 15th one. What exactly the 15th question speaks about, students? A swimmer wishes to cross a 500-meter river flowing at 5 kilometers per hour. Okay, let us say that this is the width of the river, students. Okay, 500 kilometer. Okay, and it's flowing with 5 kilometers per hour. His speed in still water is 3 kilometers per hour. So the speed is 3 kilometers per hour. So if in case अगर वो swimmer इस तरफ जाना चाहता है, students, with speed 3 kilometers per hour, so will you go with 3 speed? No, it will not go with 3 speed. It will go in this particular direction. Are you getting it? So the velocity of swimmer is 3 kilometers per hour, students. Now the question asks the students, if he heads in the direction making an angle theta with the flow. Since if he makes an angle theta with the flow, the answer is no. Ye flow hai, and he is moving to can I say he's making an angle theta with the flow. The answer is theta with the flow. Then I say this is angle theta. He's forming an angle theta with the flow, students. Agreed. So by alternate angles, can I say this angle is also theta? Everybody listen carefully, students. Can you now see? I'm getting a triangle. Velocity of the swimmer 3. ये जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इस तरफ होगा, इसी वेक्टर को मैंने ले लिया पैरेलल. एग्रीड. ये एंगल थीटा हुआ. फ्रेंड्स, कैन आई रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स? vs cos थीटा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर sin थीटा हो जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? See, the swimmer forms an angle theta with the river current. ये थीटा हुआ तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा हुआ. ये स्विमर का स्पीड, ये रिवर करंट का स्पीड, इसी वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया पैरेलल, और इसके मैंने रिजॉल्व किए दो कंपोनेंट, ये vs cos theta और ये vs sin theta. So if he heads in the direction making angle theta, we'll find the time he takes to cross the river. Students, time taken to cross the river. So what exactly time taken? Students, time taken is equal to what? Distance covered upon speed. What is the distance covered? What is the distance covered? Sorry, it's 500 meter. Students, distance covered is what? 500 meters. And students, ये वाला है distance, ध्यान से लिखना, ये distance है ना? So distance is 500. Students, what is the speed? What is the speed? So the speed will be in the same direction. उसी direction का जो distance है उसी direction में speed क्या है? Is it vs? No. Is it vw? No. Is it vs sin theta? Yes. Are you getting it? So now can I say I'm getting the time taken? 500. What is the velocity of the swimmer? Swimmer was 3. Is it in kilometers? Is it in 3 kilometers? Yes. Are you getting it? Per hour. And that will be equal to how much? Convert it into minutes we consider. So you can get your answer in minutes also, students. Agreed? So get your answer in minutes, students, you can get it. ये तुम्हें कितना दिया है? 3 kilometers per hour. So can I say this is 3000? 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds, students. तो ये आंसर मिनट्स में आ गया तुम्हारा. Agreed, students? And how much is it? Sin theta, I'm getting it. Solving कितना होगा? 1 2 3 1 2 3. Agreed? 3 2s are. Students, what is the answer you're getting it? T is equal to how much? 10 upon sin theta.
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये आंसर क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Time taken to cross the river, the width of the river, students, 10 upon sine theta in minutes. Check the answer behind. वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ये है, स्पीड along this is vs sin theta. ये स्टूडेंट्स मीटर में है, ये किलोमीटर में था तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ध्यान से समझना. एवरीबॉडी देखो, वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 किलोमीटर्स पर आवर को मैंने लिखा है 3000 मीटर्स और 1 आवर को 60 मिनट्स लिखा है स्टूडेंट्स, सेकंड्स नहीं. तो जो 60 है वो ऊपर चला गया, तो ये जो पूरा आंसर है वो मेरा मिनट्स में है, ना कि सेकंड्स में. ये पता चला? हाँ स्टूडेंट्स, Yes. Yes. ये तुम्हारा आंसर मिला. अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू कवर. Students, what is the shortest possible time? Shortest possible time का मतलब क्या हुआ? When the person doesn't swim diagonally, when the person swims straight. अगर वो बंदा straight swim करेगा तो that is the shortest time because that is the shortest distance. तो थीटा क्या बन जाता है students? Can I say in this case theta should tend to 90 degrees for shortest time. तो अगर थीटा को मैं 90 लूंगा तो can I say t is equal to 10 upon sine of 90. What is sine of 90 is 1, so what's my answer? 10 minutes. Is this clear, students? Yes, sir. Yes, sir. That's all. Hope you have understood the question, students. Question clear हुआ students सबको? हाँ sir. Yes, sir. Fine, students. So kindly revise this chapter very thoroughly. और इस चैप्टर को प्लीज लूज मत छोड़ना. जितने भी हम लोग ने प्रॉब्लम्स किए सारे प्रॉब्लम्स करना स्टूडेंट्स, सॉल्व एग्जांपल्स को भी करते रहना, फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहना. अगर तुम इस चैप्टर को छुओगे नहीं, यू विल फॉरगेट इट. ओके. Next in the kinematics students also completed students. Next lecture will be starting with circular motion. Is that clear, students? Okay, sir. Chalo, bye. Take care. Hi, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Most welcome.